हर्ष भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतना लेट अपने ऑफिस आवर्स के बाद में टाइम निकाल के आए। बाय द वे, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और पूरे दिन का ऑफिस खत्म करने के बाद में हर्ष भाई अपने साथ में आए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एसजेबी। आपने यू। बुलाया ना तो पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना, लोग एसजे तक तो जानते हैं, उसके पीछे का जो बी है उसको कोई नहीं जानता। वो जानना भी नहीं चाहिए। तो हर्ष भाई, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, खुद को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार जरा ओके, व्यूअर्स के लिए। सो आई एम अ नवंबर 19 बैच सीए और I did my articleship from EY since he asked, and I'm practicing right now, and it's been a year since I started into practice. So what you want to know about my articleship experience EY की EY मुंबई की articleship, you can imagine क्या रहा होगा. So great learning, lot of things to do. uh, so वो 3 साल की आर्टिकलशिप प्रिपेयर्स यू, वो पूरी एक पर्सनालिटी डेवलप कर देता है, सो दैट जो आगे जाके वो आपको पूरे लाइफ लॉन्ग, आई बिलीव दिस इज गोना हेल्प मी. करेक्ट। तो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब ईवाई में तो हम जान, मतलब अपन तो शुरुआत में तो एक साल मैं भी था वहां पे, साथ ही पिस रहे थे अपन, फिर मैं तो निकल गया। तो प्रोफेशनली इफ यू स्पीक, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टॉडलर अपन आईपीसीसी पढ़ के आते हैं, हम्म, वी हार्डली डू, हार्डली नो एनीथिंग, वी लुक अप भी फर्स्ट असाइनमेंट पे ही सीखते हैं. उसके बाद यू आर डायरेक्टली इन अ ईयर और टू यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द सीएफओ ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. So that itself speaks words ki what you are learning, how your personality is growing. The learning curve is at max, I believe, जो अपन costing में पढ़ते हैं CMP या subject. So it's on the max, on the go. बहुत चीजें सीखते हैं. तुमको डील करना आता है हाउ द प्रेशर इज, क्योंकि इन द ऑडिट, इन द लिमिटेड रिव्यूज, इन द फाइनल ऑडिट क्लोजर्स, एडहॉक चीजें चेंज हो जाती हैं, लास्ट मोमेंट पे कई चीजें आ जाती हैं. उस प्रेशर को हैंडल करना इट्स एन आर्ट, आई बिलीव. वो जब तक यू डोंट गो थ्रू इट यू विल नेवर बी एबल टू हैंडल इट. सो टू बी ऑनेस्ट, सीए फाइनल अपन को लगता है बहुत टफ है, जो वी ऑल वेंट थ्रू इट, बट आर्टिकलशिप का प्रेशर उससे ज्यादा था. तो वो सही एग्जाम बात है। प्रेशर ऐसा नहीं लगा कि इट्स सो मच. वी क्या हैव यही रीजन बीन होता है कि बिग फोर दैट. से ज्यादातर रैंकर्स आते हैं? मे बी, वो तो एक ठीक है, दैट्स अ सेपरेट डिबेटेबल टॉपिक आई बिलीव. So it builds your personality to handle that pressure, handle the situations and everything. जब पेपर एकदम टफ आ जाता है तो वो तुम्हारा प्रेशर हैंडलिंग के लिए काम आता है, बाकी ये जो नॉलेज तो बात होती आप कर रहे हो ना, इससे कई आर्टिकलशिप फर्म्स वालों को आइडिया ना मिल जाए कि प्रेशर दो बच्चों को ज्यादा। है. डोंट वरी, अगर प्रेशर मिलता भी है तो एज आई बिलीव लर्निंग कर्व एकदम टॉप पे होता है, सो इट्स बिल्डिंग यू ओनली, इट्स फाइन. बहुत ही सही। तो राइट आफ्टर आर्टिकलशिप यू कंटिन्यूड विद ईवाई। आप पास होने के बाद भी ईवाई को कंटिन्यू किया फॉर 9 to 10 months, या. जैसा कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर दिख जाता है। सो कितना डिफरेंस था आफ्टर ज्वाइनिंग ईवाई एज अ जॉब और आर्टिकलशिप? As a job or articleship, so just when you convert, once you qualify, I don't believe कुछ बहुत ज्यादा तुम्हारे वर्क उसमें चेंज आता है at a very start. So in the third year itself you start doing what the executives and probably 2B AMs and AMs do. So on the smaller clients you even in fact handle the entire audits, which you generally don't get to see in regular cases. So work wise immediately as such कुछ change नहीं आता, but talking about the responsibility side, wo you believe, I think 15th January my results came, 16th when I resumed office, the expectations from me a day after were lot higher, like कुछ जादू मंत्र करके आ गया भाई. एक दिन पहले बस रिजल्ट आया, आई एम द सेम पर्सन हु हैड बीन वर्किंग डे बिफोर यस्टरडे. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज देयर इज अ ह्यूज चेंज. तुमसे बहुत चीजें एक्सपेक्टेड हो जाती हैं, एंड इट्स लाइक एग्जैक्ट तुम बन गए हो एग्जीक्यूटिव, लाइक इन ईवा इट्स फर्स्ट एग्जीक्यूटिव देन एएम्स, बट तुम्हारा एक्सपेक्टेशन एक लेवल तक एएम जैसा होने लग जाता है कि that you'll be handling team, you'll be handling the audit, you'll be in control of the numbers and everything. तो एक बात मुझे बताओ, जैसे आपने बताया कि प्रेशर आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है,
साथ में उतनी अथॉरिटी भी देते हैं? नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का जो मैट्रिक्स है, जो धीरे एससीएमबी धीरे में हम आता लोग है पढ़ते हैं। यार, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अभी ठीक है रिजल्ट आया है तुम सीए बन गए हो, बट फिर एक दूसरा साइड आता है कि कुछ बड़ा तीर नहीं मारा, बहुत सारे हैं। हाँ। तो धीरे धीरे इट इट ऑफ कोर्स कम्स, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन में आ हाँ, जाएगी। ये तो है। तो ईवाई आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद आपने इसे छोड़ने का क्यों सोचा? ये पहले से ही प्लान था छोड़ने वेल टू बी ऑनेस्ट, प्लान तो कुछ अलग ही था। 15 January 2020 my my results came, I became CA. 27th March 2020 was my last day of articleship. का? अच्छा। So वो time था, and in that period of time what I initially thought in my while preparing for the finals as well and last days of my articleship as well, my thought process was to get into the practice. That was my initial mindset. So ये था 27 मार्च को खत्म होगी, देन आई विल बी लुकिंग आउट, लाइक आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर फर्म्स टू वेयर टू नेक्स्ट। सो उसके अंदर बट क्या हुआ, 15-16 मार्च के आसपास लॉकडाउन हैपेंड, कोविड केम, सारे प्लान चौपट, वी वेंट बैक होम। और उस टाइम तो वी वर जस्ट आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ जॉब इन हैंड व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। या। सो आई कंटिन्यूड विद दैट। उस टाइम तो वेंचर आउट करना बहुत ही रिस्की था। सही बात है। So then I continued in EVA for say 9-10 months after that. अच्छा, तो उसके बाद आपने बर्गर किंग ज्वाइन किया। Mhm. तो पहली बात तो बर्गर खाने को मिलते थे वहां बिल्कुल। पर? और वो मैकडी से अच्छा होता है? This I can say very, very confidently. It is better than MACD, इट in my इज। personal opinion. Yeah. So अच्छा। basically, we were very few people because we joined office in the I joined office in the COVID times, and constant changes are happening in food and beverages industry. Like they try new and new burgers. So we were the only people in office who used to taste them and rate them. ओह। So yeah, so we got to eat a lot of them and a lot of varieties and a lot of things. Not just burgers, other parathas and everything, whatever the Burger King used to try out. वेरी नाइस यार, मतलब पर्क्स ऑफ बीइंग इन Yeah, बर्गर किंग। works of the other. हाँ, बहुत ही सही। तो बर्गर किंग आपने ज्वाइन किया, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे से होकर इनवाइट कर रही थी या फिर यू लुक्ड आउट फॉर इट? uh, so I was giving interviews to be honest. उस time एक point of view तो था कि in the audits I don't want to continue in EY. अच्छा। I have to look somewhere out. और दूसरा था कि the other option was practice. तो practice उस time in the COVID times I didn't want to do क्योंकि it was almost the worst timing to start into. करेक्ट। So उस टाइम कुछ और था नहीं, और उस टाइम मेरे को था कि अभी ये जो टाइम है बिफोर आई वांट टू स्टार्ट इनटू प्रैक्टिस, तो एक फिर एक ऑप्शन भी आया, तो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज इनटू कॉर्पोरेट। आई हैव सीन द अच्छा। अदर साइड ऑफ द टेबल, हाउ टू ऑडिट एंड एवरीथिंग। अभी जाते हैं दूसरी साइड भी कि हाउ प्रिपरेशन इज डन। हम्म। और अपन जो सोचते हैं कि अपन को सारा बिजनेस समझ में आ गया ऑडिट करके, वो एक्चुअली आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, हाउ हम्म। द अदर साइड ऑफ द टेबल वर्क्स। सो मेरे को लगा कि ये एक बेस्ट टाइम है बिफोर बिफोर आई सेट इनटू प्रैक्टिस, बिकॉज एक बार प्रैक्टिस में चला गया तो फिर कॉर्पोरेट लाइफ देखने वापस नहीं मिलेगी, सही फिर बात और है। देयर इज नो कमिंग बैक। तो then I started looking out for financial this industry jobs. अच्छा। Then this came from naukri.com. I updated my profile on naukri.com and it came अच्छा, from there. I gave the interviews and things felt good, and then I joined. तो आपका प्रोफाइल क्या था बर्गर किंग पर? My profile was finance controllership. I was into the अच्छा। controllership team, so I used to handle like financial preparation, monthly expenses. So our accounting was outsourced, so we didn't have to do accounting in house. My job was to review the month end activities and everything, हम्म। and pay this vendor control, GL controls, and everything. So basically, all in all, the controllership part. राइट। मुझे अच्छे से याद है कि जब आप बर्गर किंग में थे, हमारा एक कॉन्वर्जेशन हुआ था जब आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर, मतलब जो हमारी कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके साथ Mhm. मिलकर, यू वर गोइंग टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, Yeah. बट वो हो नहीं सका। Mhm. तो ऐसा मतलब जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम लोग साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे या फिर प्रैक्टिस में जाएंगे, तो क्या चैलेंजेस बेसिकली ग्राउंड लेवल पर फेस करने पड़ते हैं, और वो क्यों नहीं हो पाता कन्वर्ट इनटू अ पार्टनरशिप फर्म? So I'll tell you a simple thing. Mm,
You will think of 10 different things and end up doing 11th. This is what happens. So you cannot say कि मैं 5 साल से ये चीज प्लान कर रहा था और I am not doing it. So situations change rapidly, things change, surroundings change, environment change. You have to adapt to it. वरना कुछ सेंस नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही करना पड़ता है. अभी at that point of time we thought of getting into a partnership. We thought that it was a good idea and we'll be able to fetch clients and get work. But when we tried to test it or kind of talk to people, so we thought it's not that easy, that it won't be such a cakewalk that we were assuming that since we have experience, since we have exposure, we'll be able to do that. So we all took a like diligent call, and since it was again a COVID time, so we had to be vigilant of our actions. राइट. So we called it off at that point of time. सो जब ये प्रैक्टिस आपने फिर फाइनली एंटर किए इनटू प्रैक्टिस, डिड यू ऑलरेडी हैव द अपॉर्चुनिटी एंड देन यू डिसाइडेड टू लीव बर्गर किंग, या फिर एक बार ऐसा सोचा कि चलो छोड़ देते हैं एंड लेट्स गेट टू इट यार कि मुझे यही करना है, दिस इज माय कॉलिंग, आई वांट टू गेट इनटू प्रैक्टिस फॉर्म, तो छोड़ देते हैं, रिस्क लेते हैं और फिर घुसेंगे प्रैक्टिस? So to be honest, my calling वाला concept मैं अपने लाइफ में पर्सनली नहीं करता, क्योंकि मेरी कॉलिंग बहुत जल्दी डिफरेंट डायरेक्शन से आती है. So over the time I have decided to stick to some things, stick to some ground rules कि एकदम से rapidly decide नहीं करना है. So when this idea hatched of getting back into the practice once the IPO was over, once I was back into the regular controllership activities, then I thought it's a good time to take a move. And since COVID situation at that point of time got in control, I'm talking about the March 21. So then I started exploring CA firms, what suits me, what work I want to do, and what would be the best fit for me. So I put my papers after I had two options, to be honest, in hand, in which I had to make a call, either of those, which one I want to join. So then I put my papers, and within a kind of, I think after putting my papers within a week, I decided where to move on. अच्छा, तो अभी जस्ट आपने मेंशन किया कि आईपीओ भी हुआ था, तो मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को बता दूं कि व्हेन ही वाज वर्किंग इन बर्गर किंग, तो उस टाइम पर उस दौरान में बर्गर किंग का आईपीओ भी आया, तो जब आ रहा था उस टाइम पे क्या माहौल था ऑफिस में? Well, the general mindset or the general things we hear in the market कि Big Four में your life is hell, you won't have work-life balance, और बहुत काम है, बहुत working hours है, और industry में जाके you'll log in at 9:30, 10 and you'll log off at 5:36. That would be your life. Still एकदम सब set रहेगा, एकदम regular चीजें रहेंगी, कुछ ऐसा hiccups नहीं आएंगे, stable life, stable income, everything. But I joined in that आग का माहौल IPO. So it was nothing different for me by working hours. So there were a lot of days when I left office at 4 o'clock, 5 o'clock in the morning. So it all depends on the work. But again, coming back to the learning curve, it's straight up. Yeah, you get to So learn a there's a lot lot to while learn. doing It's an altogether different environment, different level of scrutiny. It's not just your statutory auditors, it's a SEBI, it's the investment banks, a lot of people asking different questions, different scrutinies, and a lot of things to do. right. So you will go office and end up doing different things. अभी इन जनरल अगर देखा जाएगा ना आज के ट्रेंड पे, तो ऐसा हो गया है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यू नो विल कंप्लीट सीए, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे एंड फिर अपना एक लाइफ एक सेटल हो जाएगा. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डिसाइड टू वेंचर इनटू बिजनेस या फिर प्रैक्टिस, तो बहुत ही कम लोग सोचते हैं आज के टाइम पे, यू नो विद द इंक्रीजिंग रेगुलेशंस आल्सो, फिर बहुत ही कम लोग घुसना पसंद करते हैं. तो ऐसा क्या हुआ कि आपने प्रैक्टिस चुना एंड यू वेंट इनटू प्रैक्टिस? मतलब यू हैड अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल कि चलो अगर जॉब नहीं करना है, यू कुड हैव गॉन फॉर एनी अदर बिजनेस, बट व्हाई डिड यू डिसाइड विद प्रैक्टिसिंग? Well, that's a tough question. I would give you a simple example. If you go to a restaurant, if the menu is of one page, you will be very like confident of what you want to order. But if the restaurant will hand you a menu of 10 pages having 500 dishes, you will waste half an hour and probably be ordering the same thing which you would have ordered in a single page menu as well. Yeah. So same thing is with CA. It opens so many doors
like in all directions, that you have to take such a tough call what you want to do. It opens your door to jobs, it opens your doors for consultancy. And it's not just one job. In jobs you have so many varieties, like so many departments, so many things, so many jobs what you can do: investment banking, finance controllership, FP&A, a lot of things. And if you get into practice, it's not just practice. You can choose your department, you can choose your level of clients, you can go into SMEs, you can go into large multinational consultancies. There are a lot of things. You have to decide in which direction, and in which direction you have to further decide which sub direction you have to go into. Then you have to build your career ahead. So, to be honest, I didn't have a clarity. Even so my family background is all either doctors or engineers. I'm the first CA, अच्छा. so no one is a guiding force or a business person who would tell me like, this is set, you take this path and everything. So Okay. I'm venturing out, I'm talking to people, I'm deciding my own kind of path right now. So so to know what you want to do there, I believe there are two ways: either you choose or you eliminate. Yeah. So that's a simple strategy. So I was not able to choose, so I went into the elimination, that this thing I don't want to do, this thing I don't want to do, this thing I don't want to do, this I might be fine doing it. So I'm going with what I'll be fine doing with, and eliminating what I don't want to do. So Do you that's think how kind of I chose. do you think it's better to work for yourself? मतलब वो feeling क्या होता है? Because I've seen like all of those people who are getting into practice now, क्योंकि वो already एक tough decision लेकर घुसते हैं. So I see a lot of passion in them. बहुत passionately बात करते हैं practice के बारे में. I'll tell you one thing: Yeah, bringing your own client, employing first person working for you, and client giving you fees for the work you did will give you such a happiness that can never that can't be matched, to be honest. that is वो extremely फीलिंग true. कहीं नहीं है, वो नौकरी में नहीं है, वो धंधे में नहीं है, कुछ में नहीं है। वो जो खुद की, वो एक लगता है मेहनत की और अपने टैलेंट की और अपनी सर्विस की कमाई, उसका कोई मैच नहीं है, और वो सेटिस्फेक्शन कोई मैच हो भी नहीं सकता है। That is 100% true because I clearly remember कि जब भी मेरा पहला लेक्चर बिका था ना, मतलब I had this I had this huge, मतलब मैं पागल हो गया था मतलब वो कि ये क्या हो गया है. Somebody has trusted me with lectures, man. They are willing to pay me my राइट, fees for the lectures और वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि चलो इनसे पढ़ेंगे. राइट। Immense level of satisfaction. That won't give you monetary satisfaction, but Right, the work satisfaction what you will fetch from that, na, that's unmatched. Nothing right. can match that. मतलब उसके बाद में मेरे पास में काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई वो जिन्होंने वो मुझे फर्स्ट बोला. वाली खुशी कुछ कोई मैच नहीं कर सकता, वो हमेशा याद भी हाँ, रहेगी। वो वो पहला. जो होता है ना, जो सीए बने थे, वो जो सीए वाला दिन हाँ जो था, वो हमेशा याद रहेगा। सीए तो आज भी है। भाई, वही दिन But याद वो होता है. जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड। लाइक आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दैट, जिसमें मुझे ऐसा बोला गया है कि आप खुद से लेक्चर सेल करना बंद कर दो, आप हमारे थ्रू करो. एंड यू नो माय रिस्पॉन्स टू देम इज, सॉरी बस, माय स्टूडेंट्स आर ट्रस्टिंग मी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो हर्ष भाई, वैकेंसी है क्या आपकी फर्म? हाँ यार, आई एम लुकिंग फॉर पीपल who ओके. can एट give their commitment एट for आर्टिकलशिप लेवल या सीए लेवल पर? both, and even for semi-qualifieds. Also in my firm, as well as the clients I'm working for, a couple अच्छा. of startups and a couple of MNCs. So they are looking for people. If anyone wants to connect, please connect with me. तो मैं हर्ष भाई का लिंक्डइन का जो लिंक है अकाउंट का, उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा. यू कैन फ्रीली कनेक्ट विद हिम ऑन लिंक्डइन और आप फिर आपस में बात कर सकते हैं. इफ यू वांट टू गेट, मतलब वो सीवी अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड देन वो हो सकता है कॉन्वर्सेशन. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड या लुकिंग फॉर फर्म्स टू ज्वाइन एज एन आर्टिकल, या फिर फॉर जॉब आप ढूंढ रहे हो एज ए सेमी क्वालिफाइड या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैकेंसीज अवेलेबल हैं. और इस मामले में हर्ष भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं. बिल्कुल। बिल्डिंग ट्रस्ट इज सुपर डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू सर्विसिंग, राइट। क्योंकि जैसे मेरे लिए स्टूडेंट्स में ट्रस्ट बिल्ड करना, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, ट्रस्ट विल डेवलप ओवर टाइम. सिमिलरली विथ यू, बट आई कैन ऑलवेज एडवर्टाइज, बट बीइंग इनटू प्रैक्टिस यू कैन नॉट एडवर्टाइज. तो आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हो, या फिर वो प्रोसेस को स्पीड अप कैसे किया जा सकता है? इज देयर एनी प्लान फॉर दैट?
स्पीड अप और ट्रस्ट बिल्ड करना, इट्स नॉट अ बटन टू बी ऑनेस्ट. बटन दबाया ट्रस्ट आ गया, वो नहीं होने वाला है. So करेक्ट. service में I believe there are two things which I also try to focus on. One is what you want in service. What if you are taking any service, what you will expect. One is quality, the other is the timely service. So that's all we focus on. We as a firm as well. कि राइट. quality service, best quality 19-20 नहीं होना चाहिए उसमें. We want to give 21 only. If I have committed you for 20, I want to deliver more than 20, at least 21 at least. राइट. तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन भी रहेगा, प्लस 21 लेने के लिए ये नहीं कि 1 महीने का 4 महीने कर दिया, दैट वोंट सॉल्व योर पर्पस एज वेल. सो दीज टू थिंग्स, इस पे फोकस रहेगा तो बेस्ट है. दिस इज व्हाट आई तो बिलीव. बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा, हम क्वालिटी पे ध्यान वो देंगे. तुम ट्रस्ट, इट बिल्ड्स ओवर टाइम. तुम उसको कंटिन्यूअसली बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस देते रहोगे. सो प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि तुम एडवर्टाइज करोगे 5 क्लाइंट आ जाएंगे, वो तो कर ही नहीं सकते हो. योर क्लाइंट्स विल ब्रिंग यू क्लाइंट्स एंड योर क्लाइंट्स विल ओनली ब्रिंग यू क्लाइंट्स वंस दे आर सेटिस्फाइड. करेक्ट. करेक्ट. It's a chain which that you have to adhere to basically. यही होप के साथ में स्टूडेंट्स को रिमाइंड कर दूं, अगर आप सेटिस्फाइड हो, ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स. Absolutely. बट यू टोल्ड मी कि यू लुक फॉर क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज फॉर क्लाइंट्स यू आर बेसिकली एन एक्सपेंस. Correct. एंड वो चाहेंगे कि जितना कम एक्सपेंस हो या जितना टाइमली बेसिस पर उनका काम बच जाए उतना ज्यादा सही हो. Right. विथ ऑल्सो द रेगुलेशंस कमिंग इन और प्लस आईआईए वाला सीन भी आ रहा है, तो क्वालिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. तो वो जो चैलेंजेस हैं ये सारे, आप कैसे उसको एड्रेस करते हो, या कैसे, मतलब व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि दिस इज हाउ वी विल लुक फॉरवर्ड, और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम लोग इस तरीके से इंश्योर करेंगे, मेंटेन करेंगे. So basically, having worked with EY, the first thing or kind of the it sets the tone. Your first job sets the tone for your professional life. So basic thing was in EY or any of the big fours or any of the reputed firms is you have to provide the best of the quality service. There's no lacuna in that, and you know how the timeline works. If it's first, then it's first. There's no looking back to it. You have to work day and night, but it will be first only. So that way it just sets the tone, and my work life revolves around that only. Commitment जो है वो इधर करना है, quality से compromise करके it's a loss only. If you compromise on the quality, long term it won't help you. And talking about IIA, I think वो एक ऐसी चीज है जिसको you, me or the CA fraternity, we can just kind of talk about it, or some may oppose, some may invite or whatever, but you cannot actually help it. It's in the hands of government. उनको लाना है वो लेके आएंगे, नहीं लेके आना है नहीं लेके आएंगे. But I take it as a like a push for us. This is giving us a direct challenge to our profession की देखो तुम अगर step up नहीं करोगे, scale up नहीं करोगे, you will have competitors coming out who might eat up your job. So this is a golden opportunity for our institute as well, and for the students and for the professionals who are already working, who are already CAs, to scale up themselves. नई चीजों में जाए जो जो तुमको लग रहा है कि वो तुम्हारा कैप्चर कर लेंगे. फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स टाइप की चीजें हो गई, या कुछ और न्यूअर एज टेक्नोलॉजीज हो गई, व्हाट्स जनरली सेट की प्रेजेंटेशन टाइप और थोड़ा एनालिसिस और इस टाइप की चीजें सीएस आर बिट लैकिंग एट टाइम्स. So since you know all these which the government is trying to, what they are projecting that we will address those issues, so why can't, since you know it already, why can't you address it yourself? There are a lot of courses available, there are a lot of opportunities available. You start exploring now. You have time before they even come into the market. You should already be like fully equipped, fully immunized ki ye sab to I already know, we are already doing it. So don't get the challenge only na. Don't let them challenge you. You build yourself. That's a golden opportunity, we believe, कि to scale up at the rapid speed. मतलब बेसिकली अगर वो आ रहे हैं तो तुम नहीं आप रोक ऐसे सकते. लेवल पर पहुंच जाओ जहां पर वो आ ही ना पाए. तुम उनको तो रोक नहीं सकते. अब तुम हाँ. वो करो जो तुम कर सकते हो, तो तुम खुद को स्केल अप कर लो कि तुमको चैलेंज ही ना लगे. करेक्ट. करेक्ट. Eliminate the competition itself, yourself. सही बात है, मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, चैलेंज की तरह मत देखो. Don't think of things which you can't help. Think of things which you can help. विच यू कैन कंट्रोल. सही बात है. सो ये तो हो गई चैलेंजेस ऑन द ऑपरेशनल साइड.
बट मुझे पता है कि शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट करते हैं काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, मतलब मैं भी उससे गुजर रहा हूँ। आई एम श्योर कि शायद आपको भी उस टाइम पे कभी गुजरना पड़ा होगा। व्हाट आर द फाइनेंशियल चैलेंजेस दैट यू फेस? So practice is nothing else but a business that you are starting on your own. और ये एक वैसा, it's not a tangible good that you are trading or producing which will fetch you money or returns. So it takes time, it takes confidence on yourself, it takes perseverance, it takes consistency. So generally it is believed you have to put in 900 days of yourself to stabilize into the practice. Before 900 days, if you leave, if you fall short, it won't succeed. You have to have that 900 days in your mind that before 900 days, I won't look back. अच्छा। That confidence is required. So, talking on the financial front, it is of course, but your mindset should be ready. It should not come as a like head back. You should not expect a lot from initial days or initial months of your practice. It won't. You'll feel dissatisfied only. It's good if you can convert early and be on break even or everything, but that's a very rare scenario to be honest, unless you have the clients in hand already. हम्म। So for me personally, before I went into practice, so since I was working from home in the all the COVID times, I had a lot of savings from my job at EY राइट। and from the job at Burger King as well. हम्म। So before setting into practice, what one thing I made sure was, so initially I would also suggest others who are willing to get into practice and who don't have a financial backing. हम्म। So at least ensure that you have 6 months of finances ready with you in any dire situation. You should have uh, financials, your own savings up to the 6 months at least, like covering your generic expenses of monthly, your regular expenses and everything. And me personally, I had at least 1 year of expenses covered already. हम्म। So because that challenge you cannot avoid, that is bound to come your करेक्ट। way. And there would be times if you'll hire an employee, your employee might be earning higher than you. That would be a brutal fact. I'm राइट। brutally honest in this. So there would be situations and but you have to survive that. But you should have that in mind. Your mindset should not circle over that. That this should not happen. This will happen. करेक्ट। तो बेसिकली पहले से अपना प्लान सही तरीके से बनाओ, Yeah, you need to सेविंग्स रखो। execute it with a strategy. You cannot just leave your job, start into practice that now I'll see करेक्ट। what's coming my way. It won't work out that way. नाउ एक मतलब एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर बात करेंगे Mm-hmm. प्लानिंग की, तो द मेजर कंपटीशन आई फील कि, क्योंकि जब मैं खुद भी आर्टिकलशिप में था मैंने बात कई बार होते हुए सुना है कि द मेजर चैलेंजेस टू एनी अदर फर्म अपार्ट फ्रॉम द बिग सिक्स फर्म इज फ्रॉम द बिग सिक्स फर्म। वो मेजर कंपटीशन वहीं से आता है, क्योंकि उनसे compete करना इज मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है एक लेवल पर जाकर। कि इतना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते बट काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल तो खैर कुछ भी नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके अगेंस्ट, मतलब उनसे वो उस लेवल पर compete किया जा सके, या आप क्या करते हो, क्या सोचा है आपने उस बारे में? So basically, what makes Big Four, Big Six, or Big Tens Big Tens? Only two things again I'll put before you: the quality of service and the timeliness. Why करेक्ट। Big Fours are trusted across globe? Because of the quality of service. If it is signed by a Big Four, there is a unsaid backing that it's best quality. राइट। Like all the procedures have been adhered to, all the things have been taken care of, and this is the best, ideally the best which could have been done. करेक्ट। So that brand gets built up over the time. You cannot directly challenge, since I do all this work, or since I follow all the procedures, what the big fours even do, uh, I'm at par. No, that won't happen. You have to be consistent with the quality of service. You have to have a proven track record over that. You have to have that experience. You have to have that past, like your assignment that you have done. You have to show that consistently. And also another thing,
but people like to love their name. They want to see their name on the walls. Like, my name should be in the firm's name, my initial should be the firm's name. That's not gonna help you. You have to have a lot of people, you have to have bigger firms. You cannot centrally control everything. You cannot be a sole proprietorship and think of doing wonders across. You'll have to have departments, you have to have expert people working with expert peoples again, and Right. you have to have a proper hierarchy. You cannot work in like in a silo that I know tax, I'll do the tax practice and I'll be earning money. No, that's not going to happen. You have to have multidisciplinary firms. You have to collaborate with other people, other firms, and bring in work. Smaller firms won't make you big. You have to make your firm big. तो बेसिकली मतलब जो अलायंस करने की आप बात कह रहे हो कि अलायंस होना चाहिए बिटवीन फर्म्स, एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, आपस में काम करने चाहिए मिलकर. सो शुड दैट बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, या कैसा होना चाहिए? You cannot kind of, just because you want to work in a bigger organization or a bigger structure, you cannot just join hands with any people. You can't put 50 people in a room and say from today onwards we are partners and we'll work work together. That's not going to happen. So initially it all starts with collaborating. Like, for example, if I'm getting some valuation work, which if my firm is not doing, so I'll collaborate with another firm who has a registered valuer. So I'll get that valuation thing done from him, and some consultancy work which we provide and they don't, so they might pass it on to us. So that's how collaboration may we already work. And down the line, if you see that it's a viable business and we have a regular business and we can be of complementing nature, like complementing each other, कि उनसे हमको भी business मिले, हमको उनसे business मिले, और उस structure बैठता है, तो you can collaborate and you can put it into formal structure as well. But be it formal, be it informal, you will have to have a bigger set of people working. Okay. So फाइनली अगर एक और स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होगी, वुड बी द टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग इन is changing everything that we have around, right? Matlab, I was listening to this podcast yesterday with of Naval Ravikant, where he said that technology is going to replace everything that we are doing right now, and we will have creative jobs. I think this podcast was shot around 1 year back. और मैंने कल सुना था इसे, and I was listening to this and I already somewhere I know this कि हाँ, if you are looking for something, so you should already think about it in this way कि is your job replaceable and can it be replaced by a machine? So if it can be, then your job is not it is not a secure job. Right. In that sense, इतनी सारी चीजें अगर टेक्नोलॉजी कर सकती है और हमारे जॉब्स क्रिएटिव होने वाले हैं, तो फिर ये जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं? क्या चेंजेस आपको एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि ये चेंजेस हो सकते हैं, और हमें इसके लिए कैसे अडेप्ट करना पड़ेगा? बिकॉज इन अ सिलेबस ऑल्सो इसका हैज बिन रिमूव्ड, और जब था भी तो शायद मुझे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा उस चीज में हेल्प कर रहा था, बट एटलीस्ट वी हैड समथिंग. अब तो हट चुका है. तो फिर कैसे हम उस चीज के लिए प्रिपेयर करें जो हम जिसके लिए हमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा? Right. So basically, if you see in our, what generally in our CA profession, what is considered the two main things, one is GST, one is income tax. And you go into the details. So income tax जो सैलरी का तुम्हारा एक रेगुलर बिजनेस होता था जनरली सीए फर्म्स का, ट्रेडिशनल फर्म्स का, कि सैलरी वालों के रिटर्न भरो इजी, तो मैं तुम्हारे पर अच्छा खासा फीस ऑन अ बल्क निकल जाएगा. करेक्ट. But if you see now the new portal, all the salary details are pre-filled. You just have to see if it's correct. You just have to file. Yeah. So any literate person who wants to do his own work, he can do very easily. Correct. Without the help of a CA, unless he wants to get into some tax planning or plan for his future or plan for his investments or something like that. Correct. Otherwise, he can do on his own. Similarly, talking of the GST, since they have introduced e-invoicing as well.
I believe down the line it's gonna get all automatic. Manual written filing would be done away within five, maybe next couple of years. That's the whole intention of automating everything. E-challan should be like e-challans and everything. It all would be automated down the line. So your work would, from manual, it would ideally shift to more of analytical, more of advisory, more of consultancy. Right. What AI or machines cannot like replace the human touch. What's the Correct. human touch? Human touch is what you analyze on the basis of details you have. It's What basically the the best creative thinking. creative thinking. Machine Correct. can't create think creative. They can work on the basis of trend, they can focus, they can do such stuff, but they Correct. cannot analyze what is a viable option to you as per your family condition, as per your economic condition, as per your financial goals. It can to a certain extent, but cannot replace human entirely. Correct. Similarly, talking, this was from an individual perspective. Mhm. Similarly, talking on the company perspective, AI can tell you how your business is performing, how your sales are moving, what would be the forecast, what would be the industry focus and everything. But all the variables, all the analysis, all the decision making, AI won't decide for you what is best for your company, what direction you should choose. It can Correct. suggest you, but the decision making lies with the human only. And we have to scale up and we have to like pitch ourselves to that mark that we'll be able to address that concerns of people, Mhm. that level of thinking, and that will pay you well as well. Na? That is the cream thing. Right. One is manual work. So basically, once a report is built, then the report is analyzed. Report building takes a lot of hard work. Report analysis takes a lot of knowledge. Correct. If you build on that knowledge, you can reap benefits of it. Right. So it's very nicely said, और मैंने ऐसा काफी बार सुना है कि you should pay me because I'm going to do your work in lesser time. The time that you need, जो आपको काम चाहिए मैं उसे कम टाइम में करके खत्म करके दूंगा. इसलिए you should pay me. I'm saving your time. Correct. And that should be the correct approach as well. Na? So basically, if someone is getting paid by an hour, Mhm. and if he has a good, say for example, he has Excel skills, it's an Excel work. If he has Excel skills, he can do the work in 1 hour, which would ideally take 3 hours to do. That Correct. does not mean he gets paid for 1 hour. If he is getting your work done in 1 hour, he should be paid for his that Knowledge, for expertise his he's carrying. technical Yeah, knowledge, experience, and yeah. so you can solve much more purposes, no, in Correct. the long run. So, uh, if it's an advice to the students, it would be such कि we need people जो कि अपने जो भी knowledge वो लोग gain करते हैं या जिस भी domain के अंदर वो लोग आगे progress करते हैं, they should be the masters of it. So Correct. the focus should be more towards conceptual understanding and creative application of that concept rather than memorizing it simply. Now, on that perspective, should the approach of examination also change? So, commenting on the exam, I'm not the right person to do that. So basically, I believe CA profession may exams play a certain amount of role. What your CA degree is, that's just a certification that all the knowledge that you have studied so far, you understand it, and probably you will able to implement it in your professional life. But that's not a guarantee or like a certification that you will be able to do that. That Correct. you have to put the investment in yourself. You have to work on it. You have to work practically. Then only you will be able to execute it in your professional life. So Very I true. don't think exam patterns may be modified, may be improved and everything. But this thing you'll have to work on yourself only. Mhm. So I believe उसका इतना रोल नहीं है. ठीक है, एग्जाम्स पैटर्न अच्छा करो, बेटर चीजें होंगी, बेटर क्वालिटी रिजल्ट्स आएंगे, बेटर क्वालिटी नॉलेज होगी. But the practical thing, exams won't be able to help you with. That you have to do it yourself. ऑलरेडी यार प्रेसिडेंट सर जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के उन्होंने वैसे तो अनाउंस कर ही दिया they'll be moving towards open book Mhm. examination, so I think it's a good process. And Yeah, over time I've realized that IC has been really working on how the examinations should be correct. conducted या कैसे होना चाहिए सब कुछ, and they are really working hard and willing to create better chartered accountants and quality chartered accountants, which is great step by ICI. Mhm. On that note, एक फाइनल बात करते हैं कि
अगर कोई प्रैक्टिस में आना चाहता है तो क्या एक फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से रहेगा टू ऑल्सो कंसिडर दैट कि वो पास भी हो चुका है या फिर पास होने के पहले भी व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग, ही और शी इज प्रिपेयरिंग, तो व्हाट आर थिंग्स दैट द पर्सन शुड थिंक ऑफ एंड टेक केयर? सी, एक तो सबसे पहली चीज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिस इज डिटर्मिनेशन. और अपने आप को अगेन से 900 days तुमको देना पड़ेगा. उससे पहले यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज योर कॉन्फिडेंस और थिंक ऑफ, बिकॉज वंस यू आर इनटू दैट फील्ड ना, इन टू 1-2 महीने तो एकदम टेम्पो एकदम हाई रहेगा. बट उसके बाद लगेगा यार मैं नौकरी करता तो क्या मेरी सैलरी होती. मेरे साथ वाले थे उनका प्रमोशन हो रहा है, वो स्टेबल इनकम है, गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इधर उधर, एंड यू आर फाइटिंग फॉर ब्रेड एंड बटर ओवर हियर. सो वो चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए. वो तुमको डिटर्मिनेशन रखना ही पड़ेगा और खुद को 900 दिन देने ही पड़ेंगे. देयर इज नो लुकिंग बैक टू इट. राइट। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट तो हो गया डिटर्मिनेशन. दूसरा, यू शुड हैव अ विजन एज वेल कि तुमको करना क्या है. प्रैक्टिस इज अ वेरी वास्ट थिंग. उसमें there are a lot of things which you can do, and there are a lot of things which you may be able to do, which you may not be able to do. So find things which interest you, in which you are good at, and which you will be able to serve the clients as well. But at the end, your client should be happy. Otherwise, you want to get more work. You राइट। make your clients happy, you serve them with best quality work, and then your practice will grow. It rolls. It's a word of mouth only. You cannot advertise, as we discussed as well. करेक्ट। So that's a persistent effort you have to put into the practice and into yourself. You have to upscale every day. Every day is a new challenge. Every day is a new work that you look forward to. So when I go to the office, I have 10 things to do in my mind, but I end up doing 11 things which are different, and करेक्ट। 10 things stay intact. So it's a altogether different ball game. And it's a good experience. It's an experience, and in the practice you will feel you are serving yourself. That's the best, uh, basically, satisfaction that anyone can get. One thing that I would like to mention here before asking the final question is कि मैंने कहीं पर ऐसा पोस्ट देखा था. बेसिकली एक्चुअली मुझे पापा ने दिखाया था पोस्ट. आई देयर वाज वन डे जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा था कि यार क्या हो रहा है, एंड आई वाज लूजिंग माय पेशेंस कि व्हाई आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट, व्हाई इज द रिटर्न नॉट कमिंग? एंड सो माय फादर शोड मी दिस पोस्ट, एंड उस पे ऐसा लिखा हुआ था कि जो वेज अर्नर्स होते हैं उन्हें एक दिन का पैसा चाहिए होता है, जो जॉब के अंदर होते हैं उन्हें एक महीने का पैसा चाहिए होता है. बट जो आदमी खुद से काम करता है एंड बिजनेस रन करता है ना, उसे वो ही डज नॉट लुक फॉर 1 मंथ, 1 ईयर, 1 डे, ही लुक्स फॉर इयर्स एंड इयर्स टू कम. और वो लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलता है कि इन द कमिंग इयर्स देख लेंगे कहाँ तक पहुंचना है, हम भी कर लेंगे. हम भी हम कर भी लेंगे. कर लेंगे. Yeah, so practice में you cannot have short term goals. वो हमेशा आगे की ही सोच के होती है. Financially भी you think of ahead, 5 years, 10 years, and work wise also you think ahead कि अगले 5 साल में क्या काम करना है, what would be relevant in the industry 5 years down the line, 10 years down the line, where I have to work on myself, where I have to work on my firm, at what type of things I need to provide training on to the employees and everything. It's a long term goal. Practice is practice. You cannot compare. There's no comparison to it. It's your own business. It's on Yeah, you how you want to run it. correct. Just asking the final question is, what would be your final word to the students who are preparing for CA final exam? Is there any planning approach या फिर कुछ आप share करना चाहते हो advice? For studies, I did my articleship from EY, Mumbai. My work hours were, I don't know what the work hours were because I could not think of a figure in the 3 years what my work hours are actually. And the coachings the classes I took, so it was like 40% I took, and in those 40%, like all the classes I took, 40% I attended and 20% I listened to be very honest. And so I was all on my own only, and some fast track batches or something
which I had left in the last 5 months of my preparation for the CA finals. 5 months leave I got. If you talk to me before, like when I started, I knew nothing. I just knew the subjects and I just knew bit of everything. Nothing more than that. In those 5 months, the only strategy I took, the only thinking, the only mindset. So the day I started, the step home, I went home for my preparation. The day I started, I studied for I think 15 to 16 hours on the very first day. अच्छा. And then onwards till the day of my last exam, I studied for same 15 to 16 hours. Every For the day. entire 5 months, I did the same. I adhered to the same schedule. अच्छा. So the How is that only thing, possible? I don't know how it was possible. The only driving force for me was my thinking that only one thought I carried on the result day, whatever the result may be, pass or fail. On that day, I should not think कि मैं ये थोड़ा और कर लेता, तो the things might have been different. या ये थोड़ा मैंने नहीं किया इस वजह से ऐसा कुछ हुआ. मेरे को वो चांस छोड़ना ही नहीं था. So I put in whatever I could at my best level I did it. उसके अलावा तो मतलब ऑन द रिजल्ट डे आई वाज इतना कॉन्फिडेंट कि अब जो भी होगा ना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था. अब ये है कि मेरे को इम्प्रूव कहाँ करना है अगर मैं फेल हुआ तो एक माइंडसेट, एक थिंकिंग के साथ आई स्टडीड एंड थैंकफुली आई हैव पास्ड एज वेल. मैं तो इन जनरल भी बहुत ज्ञान देता रहता हूँ मतलब अपने वीडियोस में. पर आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू थिंग्स हियर. जैसे हमारा जो मेंटोरशिप चलता है ना, उसमें आई हैड टू लिटरली स्कोल्ड वन ऑफ द मेंटीज, क्योंकि ही वाज गिविंग मी एक्सक्यूजेस. और ये मैंने देखा जनरली बहुत सारे लोग करते हैं. फिर ये रियलाइज किया कि ओवर टाइम बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं. कुछ ना कुछ, कुछ जेन्युइन होते हैं रीजंस, और कुछ एक्चुअली में एक्सक्यूज होते हैं. वो उन्हें पता होता है या पता नहीं होता है, पर वो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो किसी न किसी तरीके से कर देते हैं. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि ये सारे एक्सक्यूजेस मैं समझता हूँ कि आपके स्टडी लीव के दौरान फिर भी वर्क कर जाएंगे, पर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन एक भी एक्सक्यूज सुनने कोई भी नहीं आना. आपके घर वाले भी आपसे वो एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे. तो देखो बेसिकली व्हाट आई बिलीव, सीए का जो लेवल है, सीए पास करने का, सीए का पूरी जर्नी है, वो सीए मैं मानता हूँ वही बन सकता है जिसको खुद को सीए बनना है. करेक्ट. कोई जिसको बना खुद नहीं को सकता. सीए नहीं बनना ना कभी, अगर किसी को, उसका बनना बहुत हार्ड है. मतलब बहुत नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि वो सीए बन जाए अगर उसको खुद को नहीं बनना है तो. करेक्ट. और अगर खुद को बनना है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना. सही बात है. सोच लिया है बनना है तो फिर बन के खत्म करो ना यार. क्यों सेकंड ऑप्शन देना है, या यार थोड़ा अभी टाइम पास कर लेता हूँ, देखेंगे हो जाएगा. हो जाएगा. नए एग्जाम पैटर्न में क्या होगा मेरे को पता नहीं, बट करंट एग्जाम में तो नहीं होगा. नहीं होगा. उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. करेक्ट. हाँ मतलब वही है कि अगर आपको वो मेहनत करनी है तो करनी है, सीधी बात है. काम करना है तो करना है. डिसाइड कर लिया तो फिर क्यों एफर्ट में कमी छोड़नी है. फिर करके खत्म करो. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि चलो ये वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं, ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन में निकल जाएगा, ये टॉपिक तो आता ही नहीं है. वो ऑप्शन सब है छोड़ना ही क्यों तो आईसीए आपको ऑप्शनल सीए की तरह छोड़ देगा अभी, फिर क्या मतलब है. है. वही वही वही. सो और जो आई तुम होप. ऑप्शनल के लिए छोड़ के जाओगे ना, 90% वो क्वेश्चन आने वाला है. मैं तो वही कहता हूँ कि जो आप छोड़ के जाओगे ऐसे वहीं से कोई वही पूछेगा. आने वाला है. चलो आई होप कि स्टूडेंट्स ये बात को सुने और इसके बाद ये समझ लें कि उन्हें पढ़ना जरूरी है. इसे सीए के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा. आप इसे बीकॉम की तरह से नहीं पढ़ सकते कि चलो ये तो छोड़ देते हैं. यू विल हैव टू पे दैट रिस्पेक्ट टू द सीए एग्जामिनेशन, और उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू सो मच हर्ष फॉर कमिंग एंड गिविंग ब्यूटीफुल इनसाइट्स अबाउट प्रैक्टिस. मुझे काफी कुछ पता था बिकॉज वो बिजनेस जो होता है वो सेम होता है, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी एक नॉर्मल अदर बिजनेस, और वो मुझे आज ज्यादा समझ में आई. आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में एवरीवन हु इज विलिंग टू गेट इनटू प्रैक्टिस, या फिर जो नहीं भी विलिंग थे, उनको कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन मिला होगा, या कोई आइडिया मिला होगा, या कोई गाइड हो गया होगा कि हम इस पाथ पर करके सिक्योरली प्रैक्टिस के अंदर जा सकते हैं. एंड और दोज हु आर ऑलरेडी मोटिवेटेड टू गो इनटू प्रैक्टिस, आई एम 100% श्योर कि वो और ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद.
कि हाँ यार प्रैक्टिस में जाते हैं, लेट्स डू आवर ओन थिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, स्पेशली ये लेट आवर्स में आने के लिए। आई होप यू हैड फन इन दिस सेशन। Of course, thanks a lot for inviting me. So, last parting words I would just like to add: life is full of experiments. Don't think whether you are 24, 25, 26, if you're not able to decide कि तुमको क्या करना है, you're not finalized with your goal. KFC के फाउंडर ने पोस्ट रिटायरमेंट KFC स्टार्ट किया था, so there is no age limit or age range in which you have to decide. बहुत अच्छी बात है अगर तुमको पहले ही पता चल गया कि तुमको क्या करना है और तुमको वो करते करते मजा भी आ रहा है, नथिंग बेटर देन दैट। बट अगर वैसा नहीं है तो डोंट फील बैड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बात करो, पता चलेगा, तुम्हारे जैसे बहुत होंगे। So it's fine. Don't take it as a stress. Life is full of opportunities, full of experiences, full of new things. Every day is a new day. Take it as it is. So wonderful. With these golden words, we end this session. Thank you so much for watching. I hope आपको पसंद आया होगा. If you want to watch the previous session on forensic audit, आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा, you can click on it. If you want to watch SCMP lectures, again एक playlist का पॉपअप आएगा, you can click on it. Make sure to subscribe to the channel. Subscribe करो, और वीडियोस इस तरह के आने वाले, career related and SCMP related. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.